Mondheilager Walle Walle Aschmanzera Sonnish meinen zu Heiwande Aschmanzera. So I pulled this song out of the kitty that I had and I told him कि चल ये करते हैं. And then I played it to him and he is instantly like in love with it and he said no the song. Hello, hi. We have Aabha, Hanjura with us. Congratulations for Mujrat. Thank you so much Rafiq. I'm Lovely, lovely, lovely गाना. Great vibes. अभी सुन रहा था मैं, बहुत मजा आया. thank you so much. शादी अभी वाला मूड आ गया ना मतलब एकदम. हाँ, मतलब वो एक पूरा फील लेकर आए हो आप मुजरात वाला. ये दिन मेहंदी हाँ. रात का पूरा एक सेंस है इस गाने में. म्यूजिकली काफी रिच गाना है. टेल मी मोर अबाउट इट. हाँ, मेरे को हमेशा से ना एक मॉडर्न कोशूर फोकलोर करना था and I also wanted to do a song that really brings alive Moinzrat as a tradition that we have as Kashmiris, and I feel it's a very unique, pre-wedding function that we have in Kashmiris, which is मतलब मैंने बहुत सारे weddings attend करे हैं and but I think the vibe that we have at Kashmiri weddings is special. It's so unique and it's an all night thing and it is something you make memories at as a kid, as an adult, as a grown up, as an older generation. So हमारी weddings में इतना हमारा cultural heritage हम carry करते हैं. So I really wanted to do something original in that space for a long time. And then I happened to have, chatted with Kanesh, who's the music producer on this song and is also my collaborator on this song. हमने बोला था कि हम साथ में कुछ करेंगे, collab करेंगे. तो उसको मतलब I just like we spoke and we met and then I played him the song. I had written it. I written it pretty, बहुत देर पहले लिखा था and I wanted to do it. But I think वो एक सही टाइम पे सही वो हो गया हमारा amalgamation. पहले मैंने सोचा कुछ फोक में करूंगी उसके साथ एंड देन ही सेड नहीं हम कुछ आपका ओरिजिनल करते हैं. So I pulled this song out of the kitty that I had and I told him कि चल ये करते हैं. And then I played it to him and he is instantly like in love with it and he said no the song. And we just went for it, yeah, and it was so क्या बोलते हैं natural and organic ना. The song has a composition which is very Kashmiri in nature but at the same time a little modern. Musically it has a very simple chorus which anybody will remember and for me like that is a very it's like a folk pop song. Like any pop song has that quality, right, that you want to listen to it again and again. It should be loopable and so I kept the words very simple. I wanted to write it in a very simple way so that even kids can remember the song, which is very True. ऐसे क्या होता है ना कभी गाने हम ऐसे होने चाहिए जो हर जनरेशन को एकदम easily कनेक्ट करे. so for me like my daughter just sings the song like non-stop, so I knew that okay if I keep it to this age then Yeah. I think you're home. So wanted to keep it simple and I wanted to also keep it from the bride's perspective कि ये जो लड़कियों की में मतलब है तो ये टेक्निकली मेहंदी रात का गाना कि जो गाने में सारी जो मेहंदी रात में जो जो होता है उस सबके मेंशंस हैं. विजुअलाइजर हमने इसका जो शिखाने और आदर्श ने बनाया है. We I think it is done in a very cute way where we try to showcase how would it be if a Kashmiri Mehndi Raat was happening at the banks of the Dal, ऐसे करके that was the picture I had in my mind. And I think as we began the process of music video, it just came together so beautifully. And छोटे-छोटे चीज़ें उसमें merge रूल से लेके जो हमारी और जो बुआज लेके आती हैं सर पे from roof, everything and जो बचना धुआं होता है, I wanted to keep it all in the video. और वो सब आपने उस आर्ट में भी दिखाया है एंड दैट रियली समथिंग जो कनेक्ट कर देता है. जी. तो वो विजुअलाइजर बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि मैं म्यूजिक वीडियो नहीं किया. मेरे गाने में यूजुअली बहुत म्यूजिक वीडियोस होते हैं. This one we wanted to do it in this way where we're really able to show everything and we given a little bit of a modern and a very contemporary and a very today sort of a touch that is relevant for all. So we had मेरे को बहुत मजा आया by making this song. I really relived my own Moonzrat. क्या बात है. तो अब सबसे बड़ी बात तो जैसे आपने कहा कि एक ये है कि नई जनरेशन आपकी अपनी डॉटर इस गाने को अगर सुन रही है, शी इज सेलिब्रेटिंग इट एंड वही चीज़ आपने वीडियो में भी उसी तरह से जो आपने कहा कि रिलेट हो सब न्यू जनरेशन से, जेन जी से एंड आने वाली जनरेशन के साथ वो दिख रहा है. बट आप इसी जगह से बिलोंग करती हैं. कश्मीर में काफ़ी रिच कल्चर है.
जैसे आपने कनिष्क के साथ ये कोलैबोरेशन किया एंड बहुत खूबसूरती से ये निखर के आया है, बहुत खूबसूरती से। इट्स नॉट जस्ट एक सिंगल कोलैबोरेशन इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक जो प्रोड्यूस उन्होंने किया। जैसे आपने आर्ट के बारे में भी बात किया, आर्ट वो लोग जिन्होंने ये आर्ट बनाया, विजुअलाइज किया, वो भी कश्मीरी नहीं है, आपने उनसे बनवाया। दैट इज समथिंग दैट वी शुड सेलिब्रेट आल्सो, कि आपने इतना डीपली इस पे काम किया है। कितना टाइम लगा है, कब से चल रहा था, लाइक ये पूरा जो जर्नी है, मीटिंग तनिष्क फॉर दिस सॉन्ग एंड देन ये जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, कितना टाइम लगा? आई थिंक हमने ये गाना पिछले साल स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट। बाय द टाइम वी मेट, मी एंड कनिष्क मेट समवेयर इन आवर लास्ट ईयर, एंड देन when we met and we just jammed on the song, वो तो बहुत pretty quickly we put it down. That was fast. I think कभी-कभी कुछ गानों में क्या होता है ना, कुछ गाने बहुत टाइम लेते हैं लिखने में। जैसे मेरे मकान जो मेरा इससे पहले सिंगल था, वो 5 साल का प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत वक्त लगा करते करते। ये गाना बहुत जल्दी हुआ है, बट कभी-कभी जस्ट अ सॉन्ग टू सॉन्ग, यू कांट से एक ही जनरलाइजेशन, बट गाना वी पुट द वाइब डाउन प्रीटी क्विकली। देन बाय द टाइम वी वर एबल टू गेट टू द फाइनल मिक्स ऑफ द सॉन्ग, दैट वाज डन। बट विजुअलाइजिंग में हमने बहुत बैक एंड फोर्थ किए। आपको याद है मैंने आपको भी परेशान किया था, रन दिस कॉन्टेस्ट on my page about what will be the visual of this song. I was very particular कि ये ऐसी चीज है where it's not a generic thing, it's related to a very important wedding tradition, and every सबकी feelings और emotions इन चीजों से जुड़ी होती है। So it's very important कि इसको सही तरीके से हम दिखाएं। That was very important for me. तो हालांकि जो हमने उस समय वो एक्सरसाइज किया था, जो कॉन्टेस्ट किया था फैंस के साथ, वो भी चालू है, और उस पर फिर भी उसकी रिजल्ट्स भी आएंगे। दैट विल हैपन, there will be a lot of videos that will come from there also, but I wanted that the main music video should have that essence, so that took time. And now I was the only Kashmiri on this project, and of course Kashmiri, and the visual artists were not Kashmiri. So by the time we got to the final but look and feel of it, I think that we really did it together. And sometimes I was very very overly particular about the details, which to someone who is not from Kashmir, they will not know कि यार ये इतना क्यों है कि ये ऐसे हिजाब अगर पहना है तो ये ऐसे इस कलर का होना चाहिए, अगर ऐसा वैसा होना चाहिए, और अगर किसी ने अटोर पहना है तो ऐसे होना चाहिए, रंगा ऐसा होना चाहिए। Why should it be like so particular? But I guess props to the team. They were also so understanding, and they were really brought it together, and they brought their best to the table. I feel it's the first time that to this extent we have showcased different nuances of the culture of Kashmir in this format of a visualizer. So it's also very fresh and new. So जिसका मुझे पता था कि I was like waiting कि लोग कैसा feedback देंगे. Because people are used to that music video and my face in the song and all of that. But with God's grace, सबने बहुत अच्छा response दिया और बहुत अच्छे से इसको accept किया, and people have really found themselves in it in a way ना। अपनी मेहंदी रात थोड़ी याद आ गई रिलेट कर रहे हैं लोग। सबसे बड़ी सक्सेस तो यही है। एंड नाउ दिस सॉन्ग इज ऑन रेड एफएम एंड हम लोग भी बजा रहे हैं, एंड इट्स अक्रॉस, इट्स ऑल ओवर। सो ये एसोसिएशन हमारा और आपका तो काफ़ी पुराना है, रेड एफएम के साथ आपका एसोसिएशन। एंड गाने की एक आध लाइन हो जाए जो अभी देखने वाले प्लेटफॉर्म पे है। yes, और मैंने एक्चुअली इनफैक्ट बहुत, बिकॉज रेड एफएम और मेरा इतना प्यारा रिश्ता है, एंड वी हैव सच you guys are long time collaborators, and I really love the whole team, because I think जिस तरीके से इंडी म्यूजिक को रेड एफएम सपोर्ट करता है इज ब्रिलियंट। एंड अभी हिमालयन इंडी फेस्ट में मैं जो परफॉर्म कर रही थी, Yes. because this is such a special relationship. For the first time I even premiered and played this song live before it was even released at the Himalayan Indie Fest. Yes. So it was gorgeous, and I have to tell you that for me, मैंने मतलब surprise drop किया ये गाना set में, and Himalayan Indie Fest was done so beautifully by you guys, and there were people from all various there were artists from different Himalayan regions, yeah. who were performing, and I was also headlining the festival. But by the time we played, it was like almost like towards the end of the festival, and there were so many people from different places in Delhi who were there, and we played this proper Kashmiri Mohanjat song. I think the response was fabulous. I really enjoyed it. जो लोगों ने instantly connect किया ना at Himalayan Indie Fest with the song,
For me, I knew it that night. After 2 days, we were supposed to release, and I called Kanishk and I said, "Listen, I think people have really vibed with the song. Like pretty instantly, we were singing the chorus. So, I think props to you guys also for that fest and the fact that it was so beautifully done. And बहुत मजा आया उस परफॉर्मेंस का वीडियो हम बहुत जल्दी ड्रॉप करने वाले हैं. That will also. लवली 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 लवली, पर अभी आपको गाना पड़ेगा जी, हमें बिल्कुल. मैं इसका ना I'll just find the track for this and I will sing it. या Montailage Valley Valley Astmanzera Sonnish Meinen zu Haivande Astmanzera Varhailaga Khan Majid Astmanzera Asakin the Lola Bara Astmanzera Montailage Valley Valley Astmanzera. क्या बात है, वाह वाह, दिस इज द वाइब, यही तो वाइब जिसके बारे में हम टॉकिंग अबाउट कि आप सुन रहे हैं एक बार में और तो यहीं पर रुक जाते हैं and you want to vibe on this song. It's the beauty जो आपने इस गाने में खूबसूरती से एक वही फोकलोर एंड मॉडर्न टच के साथ. what was your brief to your producer कि क्या नई जनरेशन को कनेक्ट करना है, ओल्ड वाइब्स भी रखनी है, so what was your brief? I think, see, क्योंकि ये collab था, तो I wanted to really keep it like a collab. It was not like I wanted that Kanishk should also bring himself into the project and his, thing in which he's done so beautifully. And I had to do my part, which was to write the song, compose it, sing it, and he had to do it his way. And I would still say that I was so I was in love with the folk stuff and folk pop stuff that he has done with Kavita ma'am, jo Rangi Sari, and the huge hits. And but apart from that, there are other albums of his that I had really liked. जिसमें कुछ गाने मेरे favorite भी थे, साजा साहिब and so many others. And वो folk को ना बहुत ही मॉडर्न तरीके से इन अ रियल वे, लाइक ऐसे तो सब कहते हैं कि आप फोक को मॉडर्न कर सकते हैं, बट ही समबडी रियली ब्रिंग्स इन दैट वेरी his own sensibility in it, and which we really had in this song. So everything from the design sound wise was him. He had this idea. जब मैंने उसको बताया था कि मैंने उसको ये बस इतना बोला था कि जैसे होती है वैसे लोगों को सुननी चाहिए. Like for example, when there is some acoustics to Mehndi Raat. Like for example, there are sometimes there are backing singers. There's like also that whole five ki friends and family are together in this. It's not our Mehndi Raat is not like the sangeets that happen, right? Those fancy sangeets that happen. हमारे ऐसी होती है जिसमें फैमिली सब एक साथ डांस कर रहे होते हैं, एक फोक ensemble होता है जब सब लोग गा रहे होते हैं, और आपको बहुत ही ज़्यादा लोगों की आवाज़ें आएँगी जो होए होए कर रहे हैं, अब इसको हो कर रहे हैं या फिर साथ में नाच रहे हैं. So it's very that's what I wanted to bring together, that there is a lot of, it's a very intimate function, and that should come across. So I think he really brought it in the best way, that way, right? Why I'm doing the voices that the way he did, and producing it, of course, the way he did. And we had Tapasna play on this for the first time I worked with him. So of course वो कश्मीर की खुशबू with संतूर and रबाब, हम लोग श्योर थे कि वो तो हमेशा मेरे म्यूजिक में रहता है. I've always kept that sound of Kashmir alive in my song. Nice. So we wanted to keep that going, which we had with the those strokes. And of course, then the production of it, like when I heard it, I was like, this will be, I was in love with it pretty instantly, because I knew that this is about going to be that song जो आगे भी बहुत चले. जैसे Yes. हम आज भी पोपरो पोपरो गाते हैं, वो उस समय एना साहब ने और सबने जो उस गाने को एज अ फोकलोर इंट्रोड्यूस करा, राइट? It was already a folk in Kashmir, but they really brought it alive in a modern way for people. At that time, when a modernization of Kashmiri folk has been happening from a long time, I wanted कि मैं ऐसा कुछ लेके आऊँ जो गाना हमेशा जुड़ा रहे शायद मेरे साथ ही, कि ये मंजरात है, ये आभा का गाना है. शादियों में बजे, बस मैं वही चाहती हूँ. It should be played in weddings for And this is, लेकिन वो एलिमेंट तो आपने ऐड किया हुआ है कि ये गाना जब आए तो सबकी जुबान पर हो, क्योंकि लली जूल अजालियो बीच में उसका एक पार्ट अपने एक लास्ट में folk add किया, just हाँ, for and like it was fitting. I was thinking, let me not put, but then I just thought that it's fitting so beautifully. Like, हाँ. and like, let's have that.
it's going with the flow now. So let's give it. That was a very last minute decision. We almost didn't have it. And then last May, I was like, while recording it, it just happened so naturally, organically. I was like, it's sounding beautiful. Let's keep it. So, but people are connecting with that also because Loli Zula Zaleo is like, Lala Zula Zaleo is like such a wedding song, right? हाँ हाँ So, yeah. कोई ब्राइड का पूरा एंगल इसमें आपने पूरा वो, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्राइड ओनली, जो लोग वहां पर हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब सेलिब्रेट करें। एंड जिस तरह से जैसे गाने को प्रोड्यूस किया गया है, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग हिट इन एवरी मेहंदी नाइट्स, क्योंकि अब तो अभी हमारा सीजन अब शुरू हो रहा है, तो आपको क्या हो रहा है? वेट कर 10-12 दिन पहले आपने ड्रॉप किया है, सो अब डिसाइड हो रहा है कि गाना कहाँ जाएगा, कहाँ बजेगा। सो अब ये शादी वेडिंग सब स्टार्ट होंगी ना, अब स्टार्ट होंगी, तो अब ये गाना बजेगा। सो अब इस गाने पर रील्स आएंगे, अपने रील्स पे डालिए इस गाने को, जब आपको मेहंदी रात वाली जो भी रील है सब उसमें सब डालें इस गाने को। ये स्पेशली आप रिक्वेस्ट करें ना, जो आप दुल्हनें बनने वाली हैं, हाँ। उनसे स्पेशली हम लोग बोल सकते हैं कि यू कैन यूज दिस सॉन्ग, बहुत खूबसूरती से आप बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट राइट, हमारा जो कश्मीर का जो यूनिकनेस है यार, इन आवर ट्रेडिशन एंड इन आवर दिस वन, आई ऑलवेज वांटेड कि ऐसा एक गाना हो जो लाइक like you close your eyes and you can just think that okay, this is the song for the wedding that I would like to, and not ki theek hai yaar hamara there are so many Indian wedding songs that have just become Punjabi songs now, which is also great. I feel like there is some amount of freshness in even wedding pop music that needs to come. So Kashmiri music can add that, because I feel like it is that sort of sonically, it is very in that celebration, traditionally celebration vibe, that जो भी गाने wedding में hit होते हैं, for example usually पंजाबी होते हैं, अभी तो थोड़ी सी आपको freshness चाहिए, right? Like Punjabi is great, it's one of my favorite languages. I love singing Punjabi. After Kashmiri, I think I sing most in Punjabi. Yeah. But you need some freshness even in the wedding songs, right? How will that come? If and वो काम अब आपने शुरू किया है, and कश्मीरी wedding के लिए we have got this track, and it's going to be a good hit. We appreciate कि आप कर रहे हैं, और एक एसेंस के लिए स्पेशल थैंक यू, जो हमेशा कश्मीर का टच, कश्मीर के इंस्ट्रूमेंट्स को आपको अपने गानों में जगह देते हैं। एंड उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि जो आपका बैंड परफॉर्मेंस होता है, there's a proper set that's being played by कश्मीरी आर्टिस्ट, एंड वो सारा कश्मीर के इंस्ट्रूमेंट्स आप कहीं भी जाके परफॉर्म कर रहे हैं, that is there, the essence is there. So उसके लिए भी स्पेशल थैंक यू। and you don't have to thank me, it's my responsibility as a Kashmiri to do that. I feel like it's always been a passion. Yeah, you know how it is. For me, I really feel alive on stage with the ensemble that comes and plays with me from Kashmir, because it's very naturally me. हर आर्टिस्ट का एक अपना एक लीनिंग होती है, there's an instrument or there is a sound which really makes them feel at home when they're playing their music. And for me, I have always tried to bring alive the folklore in my music through Kashmir sound. And touch wood, with God's grace, at various stages in India or abroad, we've had a lot of success with this, and people have loved it. जिनको नहीं भी पता है उनको भी वो languages पे वो on they are, I think when we were there at the Gulmarg festival, Yeah, festival, yeah. the 31st December night, I think we made Gulmarg party like nothing else, and it was so much fun to see people, even tourists who are not from Kashmir, वो लोग भी groove कर रहे थे, Enjoy कर रहे हैं, yeah. That's the beauty, जिसका मैं mention कर रहा था. And now ये wedding season शुरू हो रहा है, so we would love to see this song everywhere, all over our reels, and digital platform is now playing really important role एक गाने को हिट बनाने में. भले वो that is debatable कि बस 30 second गाने को आप वही पार्ट लोगों को अच्छा लगने लगा है, but at least we want you guys to do that. Do that. So, make Munjrat your Kashmir. The wedding season in Kashmir is starting now. Make it your own and then just go home with it. And I'd love to see the reels, like कैसे लोग इसको interpret करते हैं. See, that's why we don't have a music video, so you guys can make the visual thing for it. First search for your music video was like this कि हम लोग original शादियों के जो footage है उसको use करेंगे. And now हम लोग वही आ रहे हैं. So फिर से वही आ रहे हैं, पे छोड़ रहे हैं अपना कि आप करो.
आप बना सकते हैं अपना अपना म्यूजिक वीडियो. Thank you so much and बहुत बहुत शुक्रिया for talking to us and we'll just play it on Red FM and it's always like आपका music है so it's all over. So we love your music. Thank you for being with us. Thank you, Rafiq. You're always so kind, and a big love to the whole team at Red FM for really powering indie music the way that you guys do. Thank you so much. Thank you. बजाते रहो बाबा